Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. So we will wait for two, three Morning, minutes. sir. Other student can also join, and then we will start our session. Morning. Okay, students. So here I'm going to start this session. So I'm sharing my screen first. So I've shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. It's visible, sir. Yes, sir. Okay. So
Today, as I mentioned, our Python programming is based on 6 standard data types, and already we have discussed about a number, string, list, and tuple. So today we are starting with another data types available in Python programming, that is dictionary. So today we will be discussing about other two types of data types available in Python, that is dictionary and set. And already we have discussed about number, string, list, and tuple. So first of all, I am taking the case of dictionary. So what is dictionary? Basically, dictionary, as you know, we can divide all the types in sequence type or non-sequence type. So dictionary is non-sequential. It is non-sequence type. Means whatever values we will be specifying for dictionary, they will not be in a particular sequence, right? So there is no meaning of indexing or slicing here, right? So we cannot use concept of indexing or slicing on non-sequential type. And as dictionary is non-sequential, so we cannot access the value of dictionary by using indexing or slicing kind of thing. It is not available with this. Slicing and indexing and slicing is available only with sequence type, that is your string, list, and tuple. And this dictionary, as you know, based on the operation performed, we can divide our types in two categories, mutable types and immutable types. So when we are considering this, our dictionary is mutable types, means whatever value we will be specifying dictionary, further if we want to modify these values, modification means if you want to change the existing value, if you want to add new values, if you want to remove some values, so that is possible, like list. So that is possible because dictionary is mutable types. And in the dictionary, how will you specify values? So in dictionary, we will be specifying value in the form of key value pair. So here we will specify the key value pair. And you will specify that key value pair in the case of dictionary. To define dictionary, we will be using curly braces, right? And you will specify these key value pair within these curly braces. So we can specify any number of key value pair as per our requirement, right? And you can specify multiple key value pair which will be separated from each other by using comma within these curly braces, right? So if you want to add some more pairs, you can add. But when you are creating a dictionary, you need to be careful with some facts that we have with dictionary. And what are those facts? Those facts are whatever elements you are using, whatever value you are using for key, that should be unique, that should be immutable. So ये जो keys है यहाँ पे key value का pair जो आप बनाएंगे, in this case you need to specify that जो आप key use कर रहे हैं, whatever value you are using as a key, it should be unique. And you can use only immutable types as a key. So immutable type, as you know, we have, what are immutable types in Python? हाँ जी, क्या क्या है immutable types? Strings, constants, tuples. String, number, tuple. Number. Yes. So we have number, string, and tuple. So mostly we use number or string. So number, string, and tuple, but mostly we use number and string. So you can use only immutable types as a key. So you need to be careful with this fact. You need to use this fact only, and whatever value you are storing at those keys, that value can be duplicated. ये इसका यूनिक होना जरूरी नहीं है, it can be repeated also, it can be duplicated. You can use any type as a
You can use any type as a key. Sorry, as a value, not as a key. Any type can be used, but for key, it should be unique and it should be immutable type. So here, in this way. So now, if you want to access the value, how can you access? So in sequential type, we use indexing, but यहाँ पे indexing नहीं है. From dictionary, if you want to access the value, you will be using key. तो यहाँ पे एक तरह से ये आपकी हैशिंग जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. हैशिंग मीन्स मैपिंग कि जो हमारी कीज होती है, यूनिक कीज होती है, वो मैप होती है हमारी वैल्यूज से. सो दैट इज व्हाई वी कैन यूज की टू एक्सेस वैल्यू स्टोर्ड एट दैट की. तो की वैल्यू के पेयरिंग के बेसिस पे हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं. सो नाउ आई टेक वन एग्जांपल कि हाउ कैन यू क्रिएट डिक्शनरीज. तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसका. सपोज I'm creating a dictionary, and see, if you are writing like this, it is empty dictionary. If you check this, it's a dictionary without any value. So if you check the type of it, it is dictionary type. Now I'm creating one dictionary, and here I'm using some keys. Suppose I'm using 1 as a key here and storing some value at that. I'm creating another key, so you will put comma 2 colon. After that, you can specify any value here. So here I am using colon. Even you can use, as I mentioned, you can use any type as a value. So suppose here I am storing some list. I am using list as a value at that key 3. So it can be any type. So here I am creating this dictionary, and here your dictionary will be displaying like this. Right. So here. Now, how can you access the value? Suppose I want to access the value, I want to access this value. So you will access based on key. And how can you specify? See, sequence type में हम क्या करते थे? Sequence type का name लिखते थे, उस object variable का name लिखते थे, and to specify index we use square bracket. Here also we use square bracket, but we don't have index kind of thing here. So in place of index, here we will be using key. And in this dictionary, 1, 2, and 3, these are working as a key. At key 1 we have stored this value A. At key 2 we have stored this value. At key 3 we have stored this list, right? So if you want to access this value, you will specify the key of it. If you are using it, and it can be anything. यहाँ पे हम string भी use कर सकते थे इसके लिए. So in this way we can access, right? So similarly, if you want to access, if you are writing D3, क्या output आएगा? What will be the output? 10, 20, 30. और अगर म्यूटेबल टाइप में कुछ मेरे को एक्सेस करना हो तो अब D3 पे आपको मिल गया, जो इसने रिटर्न किया वो एक लिस्ट है. लिस्ट एक सीक्वेंस टाइप है. सीक्वेंस टाइप पे एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडेक्सिंग. तो अगर मैं यहाँ पे करूं, अगर इफ आई वांट टू एक्सेस 20, व्हाट शुड आई राइट? सो वी कैन राइट दिस. आर यू गेटिंग? दोनों चीजें मिक्स हो गई. सो लॉजिकली चल रहे हैं. इन दिस वे वी कैन एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम दिस आल्सो. तो एक तरह से नेस्टेड लिस्ट है. यहाँ पे यू आर नेस्टेड मेंबर है और ये मेंबर लिस्ट टाइप है. इवन वन डिक्शनरी में कंटेन अनदर डिक्शनरी आल्सो. यहाँ पे डिक्शनरी भी हो सकती थी, राइट? तो उसी तरह का कन्वेंशन यूज करेंगे. बस अगर डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में कीज के बेसिस पे एक्सेस करेंगे, और सीक्वेंस टाइप में तो आपको पता ही है वी आर यूजिंग इंडेक्सिंग. सो इन दिस वे यू कैन यूज डिक्शनरी. अब आते हैं इसके, एज आई मेंशन डिक्शनरी इज म्यूटेबल टाइप्स. तो यहाँ पे हम कुछ न्यू वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सो वी कैन परफॉर्म ऑल दिस ऑपरेशन हियर बिकॉज इट इज म्यूटेबल टाइप्स. तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नाउ वी विल सी दैट. और एक्सेस करने के लिए ना आप ये तो यूज कर ही रहे हैं, और यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक मैं डिक्शनरी बनाऊं एंड यू कैन यूज स्ट्रिंग आल्सो एज ए की. सपोज हियर आई एम यूजिंग कुछ भी नेम दे देते हैं यहाँ पे. So it's a dictionary now, and here, and if you want to access this CDEC, so obviously you will write D, the key. In this way value will be accessible.
Now, even there is one more option. You can use one function also to access the value. एक function भी होता है हमारे पास d.get. D.get. So you can use that also. So यहाँ पे भी की का नेम लिख दो कुछ भी. अगर मेरे को ये a को एक्सेस करना है तो इसकी की है 1, तो we can write 1. So alternatively you can use this also. अब दोनों में डिफरेंस क्या है इस अप्रोच में? इनमें डिफरेंस ये है कि if you are using this square bracket convention to access the value from the dictionary, and if you are written such type of value which is not available as a key, suppose I have written 4, and as you know, it will look when you are writing this 4 with this d which is dictionary, so it will look for this value as a key, but this value is not existing as a key, right? So or suppose I am writing this, suppose I am writing this. So when you are writing this, it will look for this a as a key, but this is not existing as a key because we have these keys 1, 2, 3 and name. A is not existing as a key. Here it is a value but not as a key. It will look for the key, this value as a key. So when you try, it will give you error. It will give you key error. But if you are writing this approach d.get and you are passing this which is not existing as a key, although it is expecting key, when you are using it, actually it will not give you error. It will just return none, which is thing is none. It will return nothing, and this thing is known as none in Python programming. So that is the difference. So mostly we use this convention, right? Because यहाँ पे थोड़ा सा clarity अगर नहीं है तो हमें properly error मिलेगी, but it is your choice. एक ही alternative. इन दोनों में difference क्या है वो भी हमने यहाँ पे cover कर लिया. अब आते हैं कि how can you modify the existing value? So my dictionary is this. Now suppose I want to change the value, right? किसी की पे मेरे को वैल्यू को चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? So here suppose I want to change this value. इस b को मेरे को suppose यहाँ पे कोई और वैल्यू मेरे को यूज करनी है. Suppose I want to use Pune instead of b. I want to write Pune. How can you do that? So d की बताइए अपनी और assign कर दीजिए न्यू वैल्यू, राइट? तो इस पे अगर मैं असाइन करूं न्यू वैल्यू, सी हियर आई हैव रिटन पुणे, तो नाउ इफ यू चेक द डिक्शनरी इट हैज बीन चेंज्ड, राइट? सो इन दिस वे यू कैन मॉडिफाई द वैल्यू. हाउ कैन वी ऐड न्यू वैल्यूज? How can we add new values? If you want to add new values to this, so if you are writing this scenario, suppose with this I am writing such type of value as a key which is not existing. Suppose d4 is not, we don't have 4 as a key here, right? And if you are assigning, obviously if you are trying it, if you are trying to access the value, or suppose I want to use this, I want to use this a as a key, it is not existing here. If you will try this, it will give you error, already you have seen. But if you assign some value to this, if you are assigning some value to this, suppose I am assigning some value, and here I am writing suppose Hyderabad. As you know, this key value pair is not existing. So if you are assigning such type of value by specifying such type of value as a key which is not existing, it will be added as a new key value pair. So if you are doing it, here it will give you that. It will give you that, right? Hyderabad. So it will add this as a new key value pair. So here we have this. So here, so in this way you can add new value to your dictionary. और अगर अब हम remove करने की बात करें, how can you remove the values? So we have various functions for that. There are various functions that can be used to remove the values. So here there are some function like del, तो हमने यूज किया ही था. del जो बाकी टाइप के साथ भी यूज किया वो भी हम यूज कर सकते हैं. See, you are writing del and here you have written your dictionary name, and if I am writing del d3, so what will happen? Whatever here it will look for this as a key, and जो pair है वो आपका delete हो जाएगा. अगर if you check your dictionary again, see you not find this pair here. So एक ऑप्शन तो ये है, और you must be careful with this del, क्योंकि अगर मैंने del d लिख दिया तो क्या होगा? Yes, what will happen? Delete the entire dictionary. It will destroy the definition of this d.
वैल्यू ही नहीं हटाएगा, पूरे डेफिनेशन को हटा देगा, तो ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा इसको, मेमोरी फ्री हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं डी वर्ड यूज करूंगा तो इट विल गिव यू एरर, इट विल डिस्प्ले दैट नेम एरर कि ये डिफाइन नहीं है, राइट। तो हमें इससे भी केयरफुल होना चाहिए। अभी दूसरे फंक्शन यूज करते हैं रिमूव करने के लिए। देयर इज वन मोर, देयर आर मेनी फंक्शन थ्रू विच यू कैन परफॉर्म रिमूवल। सपोज देयर इज, आई एम टेकिंग अनदर फंक्शन pop. There is one function pop, right? So here you can see we can specify key, and if whatever value you will specify, if it is not occurring as a key, it will give you error, otherwise it will return the value. तो suppose अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया name, तो क्या करेगा ये? pop जब भी आप यूज करेंगे it will look for this key and whatever pair we have it will return that, इस पे जो वैल्यू है it will return that value and after that it will be removed. तो रिटर्न का मतलब है कि अगर मैं इसको होल्ड करना चाहूँ किसी वेरिएबल में मैं करता, सपोज x इक्वल्स टू, मेरे को चाहिए कि भाई ये इसके बाद तो रिमूव हो ही जाएगी, लेकिन रिमूव करने से पहले अगर मैं इसको किसी और पर्पज के लिए यूज करना चाहूँ तो होल्ड करना चाहूँ वैल्यू को इसके डिलीशन से पहले, तो यू कैन यूज दैट आल्सो, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग पॉप इट विल रिटर्न द वैल्यू एंड देन इट विल बी रिमूव्ड। सो अगर रिटर्न कर रहा है तो मैंने इसको होल्ड कर लिया तो x के अंदर ये वैल्यू मेरे को मिलेगी, लेकिन अगर मैं डिक्शनरी चेक करूँ तो डिक्शनरी से ये रिमूव हो चुका है। सो यू कैन यूज दिस आल्सो, राइट। So here we have this option, right? And now there is one more d dot pop item. So ये जो pop item है इसमें कोई पैरामीटर आपको पास नहीं करना। ये क्या करता है, पाइथन 2x सीरीज में तो क्या करता था, अगर मैं पाइथन 2.7 पे काम कर रहा होता तो ये रैंडमली किसी भी पेयर को हटाता। पॉप आइटम का काम ये था, रैंडमली किसी भी पेयर को हटाता था। बट इन पाइथन 3 वी आर वर्किंग विद पाइथन 3.8.5, सो if you are working with any version of Python 3x series, Python 3 पे अगर हम काम कर रहे हैं, so pop item, when you are using pop item it will return the last key value pair and after that it will be removed. पहले रिटर्न करेगा लाइक दिस, उसके बाद रिमूव कर देगा लास्ट की वैल्यू पेयर को, राइट। तो रिटर्न का मतलब अगर होल्ड करना चाहते लाइक दिस तो आप होल्ड कर सकते थे। सो इफ आई एम यूजिंग इट इट विल रिटर्न एंड आफ्टर दैट इट विल बी रिमूव्ड। सो इसने रिटर्न किया, इवन इट इज शोइंग कि कौन सा पेयर रिटर्न हुआ है, तो लास्ट की वैल्यू पेयर को रिटर्न किया। और अगर आप इफ यू आर चेकिंग योर डिक्शनरी नाउ यू विल नॉट फाइंड दिस पेयर फर्दर इन दिस डिक्शनरी बिकॉज इट हैज बीन रिमूव्ड। सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म रिमूवल। और अगर सारी वैल्यूज को हमें हटाना हो तो हमने बाकी के साथ भी ये फंक्शन यूज किया हुआ क्लियर, d dot clear. If I am using it, it will clear all the values, but definition will be there. तो empty dictionary बच जाएगी। अगर मैं अब चेक करूँ डिक्शनरी तो एक empty dictionary बच गई है, तो definition is there. लेकिन अगर मैं del d कर दूं तो पूरी definition चली जाती है। उसके बाद अगर मैं इस नेम को यूज करूं तो it will give you error कि ये define नहीं है। So in this way, these are various ways to remove the values. You can use any one as per your requirement. So these are some feature of this dictionary that we can do. अब अगर यहाँ पे कुछ functions भी हैं, mutable है, तो और भी कुछ functions है जैसे keys and values। अगर आपको if you want to see those value which is occurring as a key, तो we can use d dot keys. अभी तो करेगा नहीं क्योंकि डिक्शनरी मेरी रिमूव हो चुकी है, इसलिए देखो इंटेलिजेंस फीचर में कुछ नहीं आया, तो डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं पहले। सपोज हियर वी हैव दिस, तो यहाँ पे एक डिक्शनरी है ये, एंड अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ डी डॉट कीज तो इट विल रिटर्न दोज वैल्यू एज ए की, जो कि की तरह उन वैल्यूज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका मैं रेलेवेंस बताऊंगा आपको। इसी तरह से अगर केवल वैल्यूज को देखना हो तो डी डॉट वैल्यूज करके फंक्शन से, राइट। सो वी हैव दिस आल्सो। सो हियर एक और फंक्शन है यहाँ पे जो होता है फ्रॉम कीज।
So it is what the relevance of it. यहाँ पे दो पैरामीटर है. पहला पैरामीटर में जो फर्स्ट पैरामीटर है ये कोई ट्रेबल टाइप होना चाहिए. ट्रेबल मीन्स स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है. और दूसरे आप वैल्यू बताएंगे. इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी वैल्यू बाय डिफॉल्ट इट विल टेक नन, राइट. तो एक्चुअली इसको हम कर सकते हैं कि जैसे सपोज इफ आई एम क्रिएटिंग ए डिक्शनरी और जितने भी पेयर्स हैं मैं पेयर्स डिफाइन करना चाहता हूँ और हर एक मीन्स जो भी की तरह यूज कर रहा हूँ on all the keys I want to store same values. Further we can change it as per our requirement. तो उसके इसमें हम इसको from keys को use कर सकते हैं. और भी use हो सकते हैं but mainly ये. इसका क्या meaning है? Suppose if I'm using this and here I'm passing. I think चलो एक empty dictionary लेते हैं पहले ना एक empty dictionary लेते हैं. तो अगर हम यहाँ पे use करें या directly मैं define भी करूँ, चलो एक अलग dictionary बनाता हूँ. और मैंने क्या लिखा, इस तरीके से लिखा. ये क्या हुआ, एम्प्टी डिक्शनरी हो गई. डॉट करेंगे तो ये डिक्शनरी के फंक्शन आपको दिखाएगा. तो यहाँ पे मैं एक्सेस करूं, आप नेम करके नेम को भी रेफर कर सकते थे यहाँ पे. तो हियर आई एम पासिंग सम इटरेबल. इटरेबल में सपोज मैंने लिस्ट पास कर दिया पैरामीटर में, कोई भी ट्रेबल हो सकता है. एंड हियर आई हैव रिटन सपोज ए बी. ये की तरह यूज होंगे तो ये आपके यूनिक होने चाहिए. सो हियर और सेकंड पैरामीटर में सेकंड ऑप्शनल पैरामीटर है, उसमें मैं अभी कुछ डिफाइन नहीं कर रहा. तो इफ यू आर यूजिंग इट पैरेंथेसिस आएगा यहाँ पे. तो सेकंड पैरामीटर में सेकंड पैरामीटर भी है जो आप स्पेसिफाई कर सकते हो बट आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग. वो ऑप्शनल है. सेकंड पैरामीटर इज ऑप्शनल. सो इफ यू आर यूजिंग इट एंड इफ यू चेक योर डिक्शनरी नाउ, सी व्हाट विल हैपन. इसने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें ए बी सी को इसने की तरह लिया और कोई वैल्यू आपने स्पेसिफाई नहीं की तो नन 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 कर देगा सबको. अगर मैं इन सब को इनिशियलाइज करना चाहूँ 0 से, अगर मैंने अब कोई वैल्यू पास की, जो भी वैल्यू पास करेंगे और अब अगर आप चेक करें तो इट विल असाइन दिस. फर्दर हम कुछ भी मैनिपुलेशन करना चाहें तो इन पे कर सकते हैं. तो ये भी एक फ्रॉम कीज है जो हम कई पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. डिक्शनरी को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ सम वैल्यू, सब पे सेम वैल्यू है, then we can make use of this also. So these are some functions that we have with our dictionary, right? अब if you want to iterate through, अब ये भी क्या है कि ये भी है तो collection ही. It is a collection. Dictionary is also a collection of key value pairs. वो सारे pairs का collection है. So it is also collection type. Iterable तो ये भी है. So if I want to iterate through each and every value of, means if I want to apply looping on this to access the values, क्योंकि है तो ये भी collection ना, non sequential collection मेरा dictionary. So if you want to iterate through the values of it, how can you access? पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये जितना भी हमने किया है इसको स्टोर कर देता हूँ अपनी टेक्स्ट फाइल में. Okay, लेकिन before iterating through the values of it, I would like to have a look at our PPT. कि कोई point छूटा तो नहीं है. So we will have a look at our PPT. So here you can see Python dictionary is unordered. अब ये भी एक टर्म है जो ये अनऑर्डर्ड का जो है ना, एक्चुअली इसके बारे में भी एक फैक्ट है दैट आई वुड लाइक टू मेंशन टू यू. See this Python dictionary up to 3.7, Python 2.7 में तो है ही, अब वहां पे अनऑर्डर्ड ही है ये. लेकिन अगर पाइथन 3 पे जाए तो अप टू 3.7 ये जो पाइथन था मेरा अनऑर्डर्ड था, नॉन सीक्वेंशियल तो है ही, एंड इट वाज अनऑर्डर्ड. बट अनऑर्डर्ड का मतलब व्हेन वी आर एडिंग न्यू की वैल्यू पेयर, जैसे हमने यहाँ पे एक न्यू की वैल्यू पेयर ऐड किया बाय असाइनिंग न्यू वैल्यू.
हियर सी, यहाँ पे हमने एक न्यू की वैल्यू पेयर ऐड किया था. सो दिस पेयर इज बीइंग एडेड. हम 3.8 पे काम कर रहे हैं, 3.7 के बाद है. तो पहले क्या होता था, अप टू 3.7 जब मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ये कहीं पे भी ऐड हो सकता था, ये कहीं पे भी ऐड हो सकता था. ये है मीनिंग अनऑर्डर्ड का. लेकिन अब क्या होता है, जब आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो ना न्यू वैल्यू, तो इट विल ऑलवेज बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ इट. तो इंसर्शन आपका एट द एंड ऑफ इट होगा, तो उसी उसमें होगा. अगर मैं इसमें भी एक न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करना चाहूँ, राइट, अभी मेरी डिक्शनरी है, वी हैव सम, सपोज डी का मैं केस लूँ, अगर मैं अपनी डिक्शनरी को देखो, दिस इज माय डिक्शनरी एंड इफ आई एम एडिंग सम न्यू की वैल्यू पेयर, कोई भी वैल्यू हम स्पेसिफाई कर दें यहाँ पे. सपोज आई एम पासिंग 5 एज ए की एंड स्टोरिंग, तो 5 है नहीं अभी, तो एक न्यू की वैल्यू, उस पर कोई वैल्यू मैं स्टोर करूँ. सपोज आई एम स्टोरिंग सम वैल्यू एंड इफ यू चेक योर, इट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ इट, बिकॉज 3.7 के बाद करेगा. 3.7 या उससे पहले का कोई वर्जन होता तो ये कहीं पे भी ऐड हो सकता था. तो बस इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट. तो अब इसको अनऑर्डर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि इंसर्शन में वैल्यूज आपकी एट द एंड पे जा रही है. बाकी है ये नॉन सिक्वेंशियल, इंडेक्सिंग का कोई मीनिंग नहीं है. तो बस इंसर्शन आपका एक एट द एंड ऑफ इस तरीके से हो रहा है, बट है नॉन सिक्वेंशियल. इसलिए मैंने इसको रेड में कर दिया, जैसे कि यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट. इससे पहले या पाइथन 2.7 में हम ये टर्म यूज कर सकते हैं कि पाइथन डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड, बट 2.7 के बाद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों रेड किया मैंने, आई हैव मेंशन दैट. So while other compound data types have only values as an element, a dictionary has a key value pair. Dictionary are optimized to retrieve values when the key is known, right? So creating a dictionary is as simple as placing item inside curly braces separated by comma. An item has a key and corresponding value expressed as a key by writing this key colon value pair. While values can be of finite data type and can repeat, keys must be mutable types and must be unique. We can also create a dictionary using the built-in function dict. ये भी एक ऑल्टरनेटिव तरीका है कि आप ऐसे डिक्शनरी क्रिएट कर, एम्प्टी है ये डिक्शनरी है, वी आर हैविंग 1 2 एज ए की, 8 की 1 वी हैव स्टोर्ड एप्पल, 8 की 2 वी हैव स्टोर्ड बॉल. इवन दीज वैल्यूज एज आई मेंशन कैन बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप, तो यू कैन यूज नंबर और यू कैन यूज स्ट्रिंग आल्सो हियर. एंड ऑल्टरनेटिवली यू कैन क्रिएट डिक्शनरी लाइक दिस आल्सो, जिसमें आपने पास ही डिक्शनरी किया और उसको डिक्ट कर दिया, एक तरह से कन्वर्जन किया डिक्शनरी टाइप में. इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप यू कैन क्रिएट लाइक दिस आल्सो. यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, उसमें पेयरिंग लिया है, एक टपल यूज किया आप कह सकते हो, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर की तरह काम करेगा, सेकंड उस पे वैल्यू की तरह स्टोर होगा. तो अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखेंगे, आउटपुट सबका सेम ही रहेगा, वो ऐसा ही डिस्प्ले होगा. अब आउटपुट ऐसे ही डिस्प्ले होगा. सो दीज आर जस्ट सम ऑल्टरनेटिव टू क्रिएट डिक्शनरी. Accessing element in a dictionary, you already know that we can make use of keys for that purpose. Alternative we can use get. Difference भी हमने यहाँ पे specify किया है. In the case of this convention, इसको bracket अगर use कर रहे हैं, and if you are passing such type of value which is not existing as a key, it will give you key error. But अगर get के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे error नहीं देगा, अगर है तो value return कर देगा. Changing or adding elements already we have discussed. अगर आप किसी existing key को mention कर रहे हैं and assigning new value, it will update that value. But if you are using a completely new key value pair, means ऐसी की जो exist नहीं हो रही है, and you are assigning some value into that, it will be added as a new key value pair at the end of it. If you are working with Python 3.8 and later version. Okay, removal के लिए हमने यूज किया pop item and this clear and del. यहाँ पे भी मैंने एक लाइन को रेड कलर से मेंशन किया है, Python 3.0 pop item will be used to remove last key value pair. एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ना 2.7 के अकॉर्डिंग था. 2.7 में क्या करता था, ये जो pop item था ना, ये रेंडमली किसी भी पेयर को रिटर्न करता था और रिमूव कर देता था. तो यहाँ पे भी जैसे 1 1 कर रहा है, बट अगर मैं Python 3 में इस कोड को ट्राई करूँ तो ये जो लास्ट की वैल्यू पेयर होगा ना उसको रिमूव करेगा. That is why to mention this fact I have used this red color. So please be careful with this. From sequence keys values we have taken. We have already taken this. So okay, ठीक है, ये सारे facts हमने cover किए हुए. So come to this now. तो अब मैं एक here now we want to iterate through the values. अगर मेरे को I want to iterate through the values, looping है. लूपिंग के थ्रू मेरे को इन वैल्यूज को एक्सेस करना हो किसी डिक्शनरी की. सो हाउ कैन वी डू दैट? सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक दैट केस कि हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू एक्सेस द वैल्यूज. सो हियर आई एम गोइंग टू टेक दैट केस नाउ.
suppose I'm creating a dictionary and here suppose I'm writing some values. स्पेयर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे suppose I'm creating this dictionary. Now I want to iterate through the values और उनको भी मेरे को proper यहाँ पे एक proper format के through display करना है. तो how can you access the values? Right. So if you want to access the values, you can use. Now we have two things: key and value. If you want to access both, so what you can do? You can use one function d dot items. डी पहले तो सोर्स की बात करते हैं. अगर मैं फॉर लूप यूज करूं यहाँ पे तो पहले तो सोर्स के लिए मेरे को कैसे मिलेंगे सारी चीजें. उसके लिए एक फंक्शन होता है इस डिक्शनरी के साथ आइटम्स. ये भी एक फंक्शन है एंड सो इट विल रिटर्न की एंड वैल्यूज बोथ. अब ये दो चीजों को एक्सेस कर यहाँ पे रिटर्न कर रहा है. तो फॉर लूप में हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल चाहिए इनको होल्ड करने के लिए. अगर एक वेरिएबल करेंगे तो अगर मैं एक ही वेरिएबल यूज करता हूँ, सपोज मैंने एक वेरिएबल यूज किया, suppose I have written some one variable k in, ये syntax है, colon and I am printing print k. So what will happen? See, if I am executing it, मैं नेम दे देता हूँ readdict.py. So see, so it is returning these values in the form of tuple और key values. tuple में भी क्या हो रहा है, जो tuple रिटर्न किया इसने, first value is your key, second value is your value stored that key. लेकिन अगर मेरे को दोनों को चाहिए, थोड़ा फॉर्मेटिंग के साथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम थोड़ा चेंज करेंगे. तो हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेते हैं. सपोज मैंने दो वेरिएबल लिए, के वी, कुछ भी नेम दे सकते हैं, इट्स वेरिएबल. अगर मैंने ऐसे किया तो k के अंदर आपकी जाएंगी कीज की वैल्यू, v के अंदर जाएंगी आपकी जो वैल्यूज उन कीज पे स्टोर्ड है. और मेरे को प्रॉपर थोड़ा सा डिस्प्ले भी हम थोड़ा वैसे कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से. सपोज आई एम प्रिंटिंग लाइक दिस, की इक्वल्स टू, फिर आफ्टर दैट आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू व्हिच इज वर्किंग एज ए की. उसके बाद कुछ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं एंड नेट. उसके बाद आई वांट टू डिस्प्ले वैल्यूज, बट सपोज कुछ इस तरीके यहाँ पे लेता हूँ वैल्यू एंड हियर आई एम जस्ट वी, तो वैल्यू है मेरी स्टोर होगी वी में. तो इस तरीके से मेरे को प्रिंट करना है कि की वैल्यू दिखाए और वैल्यू दिखाए यहाँ पे वैल्यू, फिर जो वैल्यूज हैं उन कीज पे उसको दिखाए. तो इस तरह से मेरे को डिस्प्ले करना है, राइट.
So here, if I'm executing it now, so see formatting. So here we have this dictionary. And this is the output. Now it is being printed like this. की आ गई और वैल्यूज आ गई इस पे. बाकी स्पेस वगैरह तो मैनेज कर सकते हैं. सपोज थोड़ा सा और मैनेज करना है तो स्लैश टी यूज कर लेते हैं. स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब 1 4 कर्सर स्पेस, तो थोड़ा अलाइन होके आ जाएंगे. जस्ट फॉर अलाइनमेंट. ज़्यादा हो गया तो कम कर सकते हैं थोड़ा. तो इट इज जस्ट, ये तो स्पेस मैनेज करने वाली बात है वैल्यूज के लिए, क्योंकि लेंथ सबकी अलग अलग है ना वैल्यूज की, इस वजह से हमारे आ रहा है. सो यू कैन मैनेज दिस एज पर योर केस. सो हियर, सो वी कैन मेक यूज ऑफ इट. यहाँ पे भी स्लैश टी कर सकते थे. सो इन दिस वे वी कैन प्रिंट इट. सो हियर वी कैन प्रिंट द वैल्यूज लाइक दिस. तो यहाँ पे दोनों के साथ डील कर सकते हैं. लेकिन अगर इफ यू आर हैविंग सम रिक्वायरमेंट दैट यू वांट टू एक्सेस ओनली कीज और you want to access only values stored in the keys of dictionary, we have that kind of scenario also. So suppose अगर मेरे को ऐसे ही करना है, सबसे पहले कुछ सेपरेटर जैसा मैं कुछ कर लेता हूँ. सपोज मेरे को कीज को केवल कीज के साथ डील करना है, तो कैसे करेंगे? मेरे को सपोज सिंपली कीज ही डिस्प्ले करानी है, तो हाउ कैन वी डू दैट? सी, सो अगर कीज को ही डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए फंक्शन मैंने बताया कि कीज को रिटर्न कराना है तो क्या यूज करते थे? फंक्शन बताया. डी डॉट आइटम्स की जगह केवल यहाँ पे चेंज करेंगे. डी डॉट आइटम्स की जगह हम करेंगे डी डॉट कीज. तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको एग्जीक्यूट करूँ, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक. ओह ओके ओके, एक्चुअली अब रिटर्न कर रहा है केवल कीज. देखो एरर कैसे आई, क्योंकि हमने यहाँ पे तो चेंज किया, बट अब ये केवल कीज को रिटर्न कर रहा है, कोई पेयर तो आ नहीं रहा, तो एक वेरिएबल चाहिए ना, इसलिए उसने वो एरर दिखाया. टू मैनी वैल्यूज की रिटर्न तो 1 आ रहा है, आप 2 वेरिएबल कर रखे हैं. तो इस तरीके से हम करते हैं. सो हियर एग्जीक्यूटिंग इट अगेन. सो हियर इट इज शोइंग कीज नाउ. ठीक है. सो वी आर गेटिंग दिस आउटपुट. पहले की वैल्यू दोनों दे रहा था, बट अब कीज किया तो कीज. इसी तरीके से अगर मेरे को केवल वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, उनको उनके थ्रू इटरेट करना है, मेरे को उस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ वैल्यूज सपोज, एंड हियर इन दैट केस सपोज वेरिएबल कुछ भी ले लो. सपोज मैंने वी ले लिया यहाँ पे, और इसकी जगह हम क्या करेंगे? वैल्यू चाहिए तो हमने बताया कि एक फंक्शन वैल्यूज है, और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसको भी. वेरिएबल है वी. सो here we can, so here we can access this like this. so value जो values है केवल values आ रही है. यहाँ पे केवल इसने की को दिखाया था, यहाँ पे values. तो और दोनों चाहिए तो दोनों का भी ऑप्शन है. so it is depending on your requirement you can make use of this. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे. सपोज अब मेरे को डिक्शनरी की जो वैल्यूज है, अभी तक तो क्या है कि जो हम डिक्शनरी बना रहे हैं कि स्टैटिक तरीके से बना रहे हैं. व्हाट अबाउट इफ आई वांट टू टेक द वैल्यूज एट रन टाइम? एक डायनेमिक डिक्शनरी बनानी है. डायनेमिक डिक्शनरी मींस टू डिफाइन द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी आई वांट टू पास एट रन टाइम. यूजर से सप्लाई करनी है. जैसे मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम टाइम मैंने पास की थी ना यूजर से, लिस्ट और टपल में स्प्लिट के थ्रू. लिस्ट में कर लेंगे, टपल ये स्प्लिट के थ्रू करते हैं तो रिटर्न लिस्ट करता है, बाकी तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टपल में. इन दैट वे आई कैन से दैट लिस्ट या टपल. सिमिलरली अगर ये टास्क आपको डिक्शनरी के साथ करना है, मतलब वैल्यू जो है यूजर से लेनी है रन टाइम पे. रन टाइम पे जब आप, रन टाइम मींस एग्जीक्यूशन टाइम, जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो. इसी को दूसरे टर्म में बोल सकते हैं आई वांट टू टेक द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी डायनेमिकली. तो जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो तब हम वैल्यू एंटर करें और उसी के बेस पे मेरी डिक्शनरी डिफाइन हो. सो हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू डू दैट? कैसे हम एक डायनेमिक डिक्शनरी बना सकते हैं? हाउ कैन यू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर? तो सी यहाँ पे, वहां पे तो केवल एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यूज होती थी, उनका कलेक्शन था. बट यहाँ पे जो कलेक्शन है वो एक पेयर का है. और अगर हम फैक्ट देखें, आई एम लुकिंग फैक्ट्स हियर. तो इफ यू वांट टू क्रिएट
अगर मेरे को कोई डिक्शनरी डिफाइन करनी है डिक्शनरी, तो पहले सपोज मैं एम्प्टी डिक्शनरी ले लूँ, उसका क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं? एम्प्टी डिक्शनरी ले लूँ, इसमें मेरे को वैल्यू ऐड करनी है यूजर से, और कोई भी वैल्यू ऐड करने के लिए डिक्शनरी में हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं डिक्शनरी का नेम, इसका ब्रैकेट में कोई भी की, कोई न्यू की, राइट? यहाँ पे हम कोई न्यू की स्पेसिफाई करते हैं और कोई न्यू वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं बाय असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? इस तरीके से अगर हम कुछ डिफाइन करें तो ये वैल्यू की वैल्यू पेयर मेरा ऐड हो जाता है इसमें, तो वी कैन मेक यूज ऑफ इट। और मल्टीपल करने हैं, यही ऑपरेशन जो ऐड करने का जो टास्क है मेरे को मल्टीपल टाइम्स करना है। मतलब अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना चाहता हूँ, तो जब भी मेरे को कोई टास्क, किसी टास्क को रिपीट करना है, मेरे को मल्टीपल वैल्यूज के साथ डील करना है, तो क्या यूज करते हैं? व्हाट वी विल बी यूजिंग इफ यू वांट टू रिपीट अवर ऑपरेशन, इफ यू वांट टू डू समथिंग मल्टीपल टाइम्स, व्हाट? लूप, फॉर लूप। यस, वी कैन यूज लूपिंग, राइट? कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, तो वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, राइट? सो लूप चला दो, तो लूप में, और मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्राम ऐसा बनाना चाहता हूँ कि उसमें भी ना यूजर का कंसर्न ले कि डू यू वांट टू ऐड सम मोर कीज और नॉट। अगर यूजर कहता है यस, तब ही ये ऐड करने का ऑप्शन मिलता रहे हमें कीज को, और अगर यूजर मना करता है कि नो आई डोंट वांट टू ऐड मोर पेयर, तो वहीं पे मेरा ये ऑपरेशन एंड हो जाए। कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाना है। सो कैसे बनाएंगे? तो कोई भी लूप यूज कर लेते हैं, तो हियर आई एम क्रिएटिंग वन स्क्रिप्ट फॉर दैट। तो पहले, सबसे पहले तो मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लेता हूँ, एक डिक्शनरी डिफाइन की एंड आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द वैल्यूज ऑफ इट, तो एम्प्टी डिक्शनरी है। उसके बाद अब मैं कोई भी लूप यूज कर लूंगा, मैं वाइल लूप यूज कर लूंगा, और सपोज मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ। कोई एक वेरिएबल ले लो, या वाइल के साथ डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कोई भी कुछ भी नेम दे दिया इसको इनिशियली मैंने ट्रू करा लिया, राइट? इस तरह की चीज़ों के लिए एक वर्ड फ्लैग जैसा कलर, बट इट्स अ वेरिएबल, और इसको इनिशियली मैंने करा लिया ट्रू। और जो कीवर्ड है ना यहाँ पे पाइथन में, ट्रू में टी कैपिटल होता है, तभी तो इस कलर में आ गया ये, राइट? सो हियर इसको इनिशियली ट्रू करा लिया, और मैंने क्यों किया? सी, मैं क्या चाहता हूँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा ऐड होने का काम चलता रहे, और जब ये फॉल्स हो तो रुक जाए, इसलिए मैंने इसको मैनेज किया। तो वाइल लिया और मैंने लिख दिया फ्लैग। इसका मतलब इनिशियली ये फाइल ट्रू है, मैं डायरेक्टली ट्रू यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऐसा भी हम कर सकते हैं। सो ट्रू कंडीशन के साथ एंटर किया तो ये इनिशियली ट्रू ही है। उसके बाद आई वांट टू टेक द वैल्यूज ऑफ की फ्रॉम द यूजर, तो यूजर से लेना है की वैल्यू, तो इनपुट फंक्शन, और जो भी की आपको चाहिए यू कैन स्पेसिफाई दैट। और मैं इसको न्यू लाइन में चाहता हूँ तो स्लैश एन कर दिया मैंने, जस्ट कि हर एक वैल्यू, हर एक जो मैसेज है वो न्यू लाइन में डिस्प्ले हो। सो हियर आई एम राइटिंग एंटर the key, suppose, so I'm writing something like this। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, राइट? और अगर न्यूमेरिक लेना हो तो इसको इंटू इंटू भी कर सकते हैं आप। अगर न्यूमेरिक लेना था सारी वैल्यू को, मैं स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ इसको। सो हियर इफ आई एम यूजिंग वैल्यू, तो हियर आई एम यूजिंग इनपुट, और यहाँ पे मेरे को इनको वैल्यूज की तरह लेना है, तो स्लैश, यहाँ पे भी हम उसको नेक्स्ट लाइन में दिखाना चाहता हूँ तो स्लैश एन, and here I am specifying enter the value, और इसको एक न्यू की वैल्यू पेयर की तरह ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, डी, इस जो वैल्यू की में आ रही है इसकी वेरिएबल में आ रही है, ये जो वेरिएबल है की वैल्यू, तो उसको की और इक्वल्स टू, और ये यहाँ पे बना दिया पेयर। जब ये पेयर बनेगा तो डी, मैंने डी क्या मैंने डिक्शनरी से एसोसिएट किया, तो एक न्यू की वैल्यू पेयर की तरह वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आपको ये अगर रिपीट करना है कि इफ यू वांट टू ऐड सम मोर, तो यहाँ पे क्या है कि हम यूजर को मैसेज दे देते हैं, कुछ यूजर प्रॉम्प्ट करा लेते हैं कि सपोज आई एम प्रॉम्प्टिंग, तो इनपुट में इनपुट फंक्शन लिया और यहाँ पे मैसेज प्रॉम्प्ट करा दिया उसको। नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहता हूँ तो स्लैश एन, एंड हियर आई एम स्पेसिफाइंग डू यू want to add any meaningful message, can do you want to add more pairs, yes, no, जैसा भी आप चाहें
जैसा भी आप चाहें आप क्लियर कैन स्पेसिफाई यस, कुछ इस तरह का मैसेज हम दे सकते हैं यूजर को। समय से होता है यू कैन डिफाइन एनीथिंग एनीवे, जिस तरीके से भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, और उसको मैं एक स्टोर कर देता हूँ वेरिएबल में। यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करेगा, जो भी वैल्यू एंटर करेगा यूजर, उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। सपोज इस वेरिएबल को नेम देता हूँ रिपीट इक्वल्स टू। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर यूजर यस करे तो ये कंटिन्यू करे, और अगर यूजर नो कर दे, इफ यूजर इज यूजिंग नो हियर, हो गया तो यहाँ पे उसके लिए कंडीशन तब हम फॉल्स कर दें। इफ तो मैं स्पेसिफाई कर दूं इफ रिपीट, अब ये ट्रू ही चल रहा है क्योंकि फ्लैग ट्रू था, ये ट्रू ही चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैंने बताया कि इफ रिपीट इक्वल्स टू, अगर यूजर ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया नो, रिपीट की वैल्यू अगर नो हो गई तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्लैग मैंने ट्रू किया इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। फॉल्स होती लूप रुक जाएगा, और फाइनली जो भी मेरी डिक्शनरी की स्टेटस होगी इस लूप से बाहर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, printing my dictionary. So here in this way you can create. So if I'm executing it, you can check it now. कुछ भी नेम दे दे इसको, suppose here I'm specifying a name dynamic dictionary .py. So see, it is asking for the values now. It is asking for values. Enter the key. So जो भी आपको वैल्यू एज ए की यूज करनी है यू कैन एंटर। सपोज आई एम एंटरिंग ए, एंटर द वैल्यू। ओहो स्लैश एन रह गया इसलिए उसने प्रिंट कर दिया, उसको स्लैश एन करते तो एस्केप सीक्वेंस करैक्टर की तरह लेता। ओके चलो कोई बात नहीं, वो तो हम चेंज कर सकते हैं, हम स्लैश एन भूल गए। तो इस पर कोई भी वैल्यू हम स्टोर करा लेते हैं जो भी आप करना चाहें, राइट। सो वट एवर वैल्यू यू वांट टू स्टोर, सपोज आई वांट टू स्टोर CDAC. Now it is asking, do you want to add more pairs? Yes. So if you have written yes, again it will ask for the key. So you can specify any value as a key. The value on this, suppose I have written C dot. इसी तरीके से जब तक आप नो नहीं करेंगे तो ये आपका रिपीट होता रहेगा। रिटर्न NIC एंटर द, ओह चलो कोई नहीं, वैसे वहाँ पे कुछ करना था, चलो कोई नहीं, कुछ भी वैल्यू। अब सपोज अगर मैं नो कर दूं तो क्या होगा, ये लूप स्टॉप हो जाएगा और आपकी डिक्शनरी जो भी आपने स्पेसिफाई किया, सी दीज वैल्यूज आर कमिंग एज ए की, जो भी आपने की पे डिफाइन किया और ये जो आपने इनकी वैल्यू स्टोर कराई। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यूज। सो in this way you can create your dynamic dictionary also. So this is about dictionary. Now come to the next data types, that is set. Mainly we use this set to perform the operation of set theory. Set theory के operations क्या क्या हो सकते हैं? Yes, क्या क्या operation perform करते हैं हम set theory में? जो मैथमेटिक्स में हम सेट थ्योरी यूज करते हैं, सेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, intersection, union also. yes. So basic, so we can use this set data type to perform with a set theory operation like union, intersection, difference, symmetric difference, right? So here तो पहले तो सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं यहाँ पे और फिर उन ऑपरेशंस पे भी आते हैं। So come to the set. So basically set, तो सेट क्या होता है, इट इज नॉन सिक्वेंशियल टाइप। ये तो होता ही मेरा एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ये नॉन सीक्वेंस टाइप होता है, नॉन सीक्वेंस, एंड इट इज अनऑर्डर्ड, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडम और आपके वे में वैल्यूज होती हैं यहाँ पे। इट इज नॉन सिक्वेंशियल,
अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ये भी कलेक्शन है. इफ you can specify multiple values within set also, these values can be of similar type or these values can be of different type, right? अब यहाँ पे जो set की जो values होंगी, so यहाँ पे set क्या होता है? set as a whole is mutable. ये set क्या है? एक mutable type है. यहाँ पे भी आप न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट? सो here it is a mutable type. Set is mutable, but you need to be careful with one fact with this. Element of set, element means value of set. Element of set should be immutable. Although set is mutable itself, but the element of set should be immutable. अगर mutable types value आप स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे set के अंदर, it will not accept that. उस वैल्यू को वो नहीं लेगा, राइट? और रैंडम तरीके से काम करता है. ये अनऑर्डर्ड है, नॉन सिक्वेंशियल है. नॉन सिक्वेंशियल है तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कोई मीनिंग नहीं है, किसी भी ऑर्डर में वैल्यूज हो सकती है. कलेक्शन है एक अनऑर्डर्ड वे में. सो अब कैसे क्रिएट करेंगे सेट को? To specify set you will be using curly braces, और curly braces में आप पेयर यूज नहीं करेंगे. कोई पेयर करते ही तो डिक्शनरी बन जाएगा. तो यहाँ पे हम आपका पेयर नहीं है, नॉन पेयर्ड वैल्यू हम एंटर करेंगे. बाकी यूज हम curly braces ही करते हैं. So see now I'll be taking some example of set now. How can we deal with our set? We are going to take that case. So if you want to create set, to switch over to our ideally, and yeah. So if you want to create set, you can specify as, and you can create any kind of set that you want to create here. कोई भी वैल्यू आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू जो है हमारी इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए. ये सारी इम्यूटेबल टाइप है. नंबर है, फ्लोट है, यहाँ पे नंबर में इंटीजर है, फ्लोट है. Here we have this string, so we have created set, so it's a set. Check the type of it, it's set, right? और random order होता है इसका, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में ये वैल्यूज आ सकती है. ठीक है, अभी हमें ऐसे दिख रहे हैं, आपको हो सकता है आप क्रिएट करें तो किसी भी ऑर्डर में आ सकती है. ऐसी स्पेसिफिकेशन में हमने कुछ ऐसा दिया था और अभी एक कुछ और ही ऑर्डर दिखा रहा है, और कुछ भी हो सकता है. मेरे को ये दिखा रहा हो सकता है आपके केस में आप सेम वैल्यू करें, आपको कुछ और दिखाए. वैल्यूज यही रहेंगी बट किसी भी ऑर्डर में हो सकती है. सो अच्छा, हाउ कैन यू क्रिएट एम्प्टी सेट? अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं s इक्वल्स टू दिस, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट? ये एम्प्टी सेट है या क्या है? डिक्शनरी. ये तो डिक्शनरी, हमने तो बताया था ये तो डिक्शनरी है. अगर मैं इसका चेक करूं टाइप ऑफिस, ऑब्वियसली इट्स अ डिक्शनरी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. सो हाउ कैन यू क्रिएट एम्प्टी सेट? तो एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे? उसके लिए हम एक फंक्शन यूज कर लेते हैं सेट. एक्चुअली समथिंग वी आर कन्वर्टिंग इनटू सेट, इस तरह से कर सकते हैं. तो केवल आप ये यूज करेंगे. अब एक एम्प्टी सेट बना है, अब एक ये एम्प्टी सेट है बेसिकली. एम्प्टी सेट को हम इस तरह से बना सकते हैं. जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेकिंग दिस. सो सेट कैन टेक एनी, ये भी मिक्स वैल्यू ले सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू है मेरी इम्यूटेबल टाइप होनी चाहिए. Although as a whole set is mutable, लेकिन वैल्यूज आपकी होनी चाहिए. अगर मैं कुछ ऐसा सेट बनाने की कोशिश करूं जिसमें कोई म्यूटेबल टाइप को मैं यूज करूं, सपोज यहाँ पे मैंने लिस्ट स्पेसिफाई कर दिया और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, बट एज पर कॉन्सेप्ट इट विल नॉट एक्सेप्ट दैट. सो सी इट इज गिविंग यू एरर, इट इज गिविंग यू एरर बिकॉज ऑफ द सेम. तो एलिमेंट इसका मेरे इम्यूटेबल टाइप्स ही होनी चाहिए, right? So that we have, and set does not take duplicate value. जो values है ना, हाँ, जो values है वो भी मेरी यूनिक होनी चाहिए. जो values है, elements means values, elements of set should be unique. या इनको यूनिकली लेता है. अगर आप डुप्लीकेट कर दोगे भी तो एरर नहीं देता, लेकिन उनको बस यूनिकली लेगा, एक ही बार लेगा. सपोज मैंने एक सेट क्रिएट किया,
हियर आई एम क्रिएटिंग ए सेट और यहाँ पे मैं वैल्यू कुछ ऐसे स्पेसिफाई कर दिया मैंने 1 2 3 1 2 4 5 7 3। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू को मैंने रिपीट कर दिया, कुछ वैल्यू को रिपीट कर रखा है, 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, राइट, यहाँ पे 3 रिपीट हो गया। बट जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो एरर नहीं करेगा, जैसे ही आप क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे एस को तो ये वैल्यू को यूनिकली ही लेगा, राइट। तो सेट डज नॉट इट विल नॉट टेक अ डुप्लीकेट वैल्यू, इट विल नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू, अगर आप स्पेसिफाई करोगे तो भी यूनिकली लेगा। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट सेट। बाकी अगर सपोज कोई म्यूटेबल टाइप है उसको सेट में कन्वर्ट करना है, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है L1, कन्वर्जन तो हम कर ही सकते हैं। तो सपोज ये एक लिस्ट है, अभी क्या ये ऑर्डर्ड तरीके से काम कर रहा है, 0 1 2 इंडेक्स है। आई कैन डू वन थिंग कि मैं इसको एक सेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। इफ आई वांट टू ट्रीट दिस वैल्यू इन द फॉर्म सेट, तो सेट फंक्शन कैन बी एक्ट एज ए टाइपकास्ट फंक्शन। टाइपकास्ट फंक्शन मींस कन्वर्टिंग वन वैल्यू इनटू अनदर टाइप। तो अगर मैं L1 पास करूं, अब ये L1 की जो वैल्यू है वो मेरी सेट में कन्वर्ट हो जाएंगी, और सेट में कन्वर्ट हो जाएगी तो अभी अनऑर्डर्ड तरीके से डिस्प्ले होंगी। अभी मेरे को 10 20 30 आ रहा है, बट जरूरी नहीं है ये हमेशा 10 20 30 इसी ऑर्डर में रहे। ये ऑर्डर मेरा कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से ये मेरा जा सकता है, राइट। अभी ये अनऑर्डर्ड है, सो हियर इन दिस वे वी कैन क्रिएट सेट। अब आते हैं, एज आई हैव मेंशन सेट इज म्यूटेबल, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन परफॉर्म दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अगर ऐड करना हो, इफ यू वांट टू ऐड सिंगल वैल्यू, सपोज इस S1 सेट के साथ मेरे को ऐड करना है एक वैल्यू, सो इफ यू वांट टू ऐड सिंगल वैल्यू यू कैन यूज दिस ऐड एन एलिमेंट टू ए सेट। तो कोई भी एलिमेंट जो भी आपको ऐड करना है यू कैन ऐड विद दैट। सपोज आई एम एडिंग सम वैल्यू हियर, इस बार स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, चलो। सो इट विल बी एडेड विद दिस। एंड इफ यू वांट टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज, if you want to add multiple values with set you can use update function। और मल्टीपल वैल्यूज की जब बात करें तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसी टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ेगी इनपुट के लिए जो मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन करती हो। तो यहाँ पे आप लिस्ट टपल जैसी स्ट्रक्चर को कॉल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो पैरामीटर है, पैरामीटर हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट। और अल्टीमेटली वो उनको यूनिकली ले लेगा वैल्यू को, जैसे S1 हमने यूज किया S1 डॉट अपडेट। अच्छा, ये अपडेट हम डिक्शनरी के साथ भी यूज कर सकते हैं अपडेट करने के लिए वैल्यू। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे S1 को अपडेट करेगा, S1 में चेंज करेगा, म्यूटेबल है तो चेंज हो जाएगा ओरिजिनल में। सो अपडेट ए सेट विद द यूनियन ऑफ इटसेल्फ एंड अदर। तो यहाँ पे आप यू कैन पास वन पैरामीटर और मोर देन वन पैरामीटर आल्सो। इवन यहाँ पे आप लिस्ट भी पास कर सकते हो। सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ कुछ वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू पास कर दी सब, और लिस्ट की तरह, तो लिस्ट है टपल है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अगर मैं इसको करूं और S1 चेक करूं तो ये वैल्यूज ऐड हो गई हैं आपकी, 4 और 5 ऐड हो गई है। कहीं पे भी हो सकती है ये रैंडम ऑर्डर में, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। सो इन दिस वे मल्टीपल वैल्यूज को भी ऐड किया जा सकता है, राइट। तो आप इसको ऐड कर सकते हो, आप टपल भी ले सकते थे, इवन यहाँ पे आप और भी पैरामीटर पास कर सकते हो अगर मेरे को ऐड करना हो। सो यू कैन यूज इन दिस वे, यू कैन ऐड न्यू वैल्यूज टू इट। और अगर रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए हमारे पास रिमूव फंक्शन है, एक डिस्कार्ड भी है, दोनों का डिफरेंस भी मैं बता दूंगा। अगर आपने रिमूव करना है तो यू कैन यूज S1 डॉट रिमूव। तो यहाँ पे यू कैन स्पेसिफाई द वैल्यू दैट यू वांट टू रिमूव, क्योंकि इंडेक्सिंग जैसा तो कुछ है नहीं, सेट तो वैसे भी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो हम यहाँ पे वैल्यू बता देंगे डायरेक्ट। सपोज मेरे को 5 को रिमूव करना है तो आई कैन यूज दिस 5। So what will happen? This value will be removed. तो अगर मैं अब S1 अपने सेट को चेक करूं, you will not find this value here. It has been removed, right? एक डिस्कार्ड भी है। अब S1 डॉट रिमूव में क्या है कि अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू स्पेसिफाई की यहाँ पे जो है ही नहीं, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया पुणे, but पुणे is not existing as a value in this set, right? So what will happen? If you are using remove, it will give you key error पुणे। But there is one more function that can be used to remove, that is discard. अगर मैं S1 dot discard करूँ, so here and if you are passing some value, suppose I want to remove seed, discard तो ये वैल्यू है तो ये हट जाएगी, S1 चेक करेंगे तो अब you don't find seed है किया। But discard में अगर मैं if I am passing such type of value which is not existing, suppose मैंने specify किया पुणे,
तो इन दिस केस डिस्कार्ड एक्चुअली इट विल नॉट गिव एरर, ऑब्वियसली ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा बट एरर नहीं देगा जैसे हम है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन मेक, अगर क्लैरिटी के साथ करना है जहाँ पे आप चाहते हो अगर वैल्यू ऐसी हो जो है नहीं उसके लिए मेरे को कुछ मैसेज मिले तो यू कैन यूज रिमूव, अदरवाइज डिस्कार्ड। और भी है जैसे पॉप, यहाँ पे भी पॉप इसके साथ भी होता है जैसे बाकी टाइप के साथ था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो पॉप फंक्शन है ना कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे आप क्योंकि अनऑर्डर्ड है। तो ये क्या करेगा जब पॉप आप करेंगे तो ये रिमूव करेगा कोई भी आइटम जो कि ऑर्बिट्ररी सेट होगा, मतलब अब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये क्या करेगा पहले रिटर्न करेगा फिर वैल्यू रिमूव होगी एंड इट कैन रिटर्न एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। अभी मेरे सेट में ये 4 वैल्यूज है राइट, अब ये 4 वैल्यूज हैं तो अगर मैं करूंगा तो इनमें से कोई भी वैल्यू रिटर्न होगी और फिर वो रिमूव हो जाएगी। तो अगर ये करें हम देखें यहाँ पर रिटर्न किया इसने 4 और S1 करेंगे तो ये आ गया। इसी तरीके से मैं फिर से अगर इसको कॉल करूं तो कोई भी वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे मेरे को लग रहा है सीक्वेंस में जा रहा है बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो जैसे कि अपने फंक्शन की अगर हम यहाँ पे इंटेलिजेंस फीचर देखें तो ये दिखा भी रहा है रिमूव एंड रिटर्न इन ऑर्बिट्रेरी सेट एलिमेंट, ऑर्बिट्रेरी किसी भी एलिमेंट को ये हटा सकता है राइट। और अगर हम चेक करें 2 वैल्यूज रिमूव हो चुकी है 4 और 10, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट फाइंड दीस वैल्यूज इन दिस सेट। और अगर हम क्लियर कर दें S1 डॉट क्लियर, obviously all the values will be removed, empty set will be there। अगर हम चेक करें empty set और del s कर देंगे, del S1 कर दे तो पूरी डेफिनेशन ही चली जाएगी। अब तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ये एरर देगा आपको। तो you can in this way you can remove the values from the set, right? तो ये तो हुआ set, what is set, what are the characteristics of set, right? So what kind of functionality, what kind of operations we can perform on our set, right? And we can convert set into tuple, set into list, or we can convert list into set or tuple into set। जो नेम है वही है मेरे टाइपकास्ट फंक्शन की तरह काम भी कर सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट, नाउ वी विल हैव लुक एट आवर पीपीटी इवन। सो set is an ordered collection of item, every element is unique, no duplicate and must be immutable। However, the set itself is mutable, we can add or remove items, means that can be changed, but sets can be used to perform mathematical set operation like union, intersection, symmetry। ये है मेन पर्पस कि सेट थ्योरी के ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं with the help of set। A set is created by placing all the items inside curly braces separated by comma or by using the built-in function set। It can have any number of items and they may be of different types, right? लेकिन but a set cannot have immutable elements like list, set or dictionary। So here you can see how can you create set। तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये काम, set का केस है। These are some facts, sets are mutable, but since they are unordered, indexing have no meaning। We cannot access change an element of set using indexing slicing। Set does not support it। If you want to perform some change into it, you can use add or update। If you want to add only one item at a time, you can use add। If you want to add multiple items, you can use update। And with update, you can pass any type, mutable या immutable कोई भी टाइप पास कर सकते हैं to specify your multiple values, right? बट उनमें भी अगर कोई ऐसी वैल्यू आपने पास की है जो ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो डुप्लीकेट आपकी इग्नोर हो जाएगी। डुप्लीकेट्स आर अवॉइडेड इन सेट। हियर वी हैव टेकन डिस्कार्ड, रिमूव, ये भी हम ले चुके हैं। पॉप फंक्शन क्लियर ऑलरेडी वी हैव टेकन। सो नाउ वी कैन यूज दिस सेट टू परफॉर्म वेरियस सेट थ्योरी ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, right? So now we will have look at it, how can you perform these operations। सबसे पहले set union, उसका मैंने Venn diagram भी बनाया यहाँ पे। So first of all I'm taking union। What is union? Union means if we have two sets A and B, so values of all the both the sets will be the union of it। तो इन दोनों का सारी वैल्यूज को लेंगे और कुछ वैल्यू अगर डुप्लीकेट होंगी तो उनको अवॉइड करेगा क्योंकि यूनिक वैल्यू लेगा, राइट? तो here you can see one example of it। तो यहाँ पे here we have two sets A and B। In set A we have these values 1 2 3 4 5। In set B we have some values 4 5 6 7 8। तो 4 5 यहाँ पे दोनों सेट में देखें तो कॉमन। अब कैसे परफॉर्म करेंगे यूनियन? You have two ways, you can use one operator or you can use function। Alternatively you can use function, it is your choice, कुछ भी यूज कर सकते हैं। See, ये ऑपरेटर हमने पहले भी यूज किया है। किस पर्पज के लिए यूज किया है ये ऑपरेटर? अगर सेट के
साथ हम यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल वैल्यूज के साथ यूज करें, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर इन पाइथन? Binary or XOR. ये इट इज बिटवाइज और ऑपरेटर। हाँ, अगर मैं नॉर्मल वैल्यू के साथ करूं, ये बिटवाइज और ऑपरेटर की तरह काम करेगा, लेकिन इफ आई एम यूजिंग द सेम सिंबल विद सेट्स, इट विल बी वर्किंग एज ए यूनियन ऑपरेटर। ठीक है, जैसा मैंने बताया थी, दिस इज पाइथन फिलोसफी कि पाइथन ट्राई करता है एक ही चीज को मल्टीपल वेज में, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाए। सो हियर इट इज वर्किंग एज ए यूनियन ऑपरेटर। तो यूनियन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, तो जैसे आपने किया ए यूनियन ऑपरेटर बी, सो इट विल टेक ऑल द वैल्यूज। जो डुप्लीकेटेड है जैसे 4 5 दोनों में है, तो इसको एक ही बार लेगा क्योंकि यूनिक वैल्यूज लेता है सेट पाइथन में। Alternatively, you can do the same thing by using function. So you can write like this also, a dot union and pass another set as a parameter. So हम a dot union b करें या b dot union a करें, आउटपुट तो सेम ही रहेगा, right? So these are alternative of it. So it is a union operator. अब आते हैं हम intersection. Intersection, what is intersection? Intersection will give you only the common values of both the set. तो ये जो shaded portion है, ये result है इसका। अब इसको परफॉर्म करने के लिए, पाइथन में इंप्लीमेंट करने के लिए, वी कैन यूज ऑपरेटर और फंक्शन। तो ऑपरेटर में वी आर यूजिंग दिस ऑपरेटर सी, ये भी हमने पहले यूज किया है, नॉर्मल वैल्यूज के साथ काम करेंगे, तो दिस ऑपरेटर इज नोन एज बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बट इन द केस ऑफ सेट इट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज फंक्शंस आल्सो। सो यू कैन सी व्हेन आई एम यूजिंग ए इंटरसेक्शन ऑपरेटर बी, सो और इफ इवन इफ यू आर एडिंग बी इंटरसेक्शन ऑपरेटर ए, it will take same values because it is taking the common values here, right? So it is taking this 4 5. Now here alternatively you can use functions to do the same. Here we are doing it. So if you are writing a dot intersection b, or even if you are writing b dot intersection, in both the cases we are getting the same output, that is common values from both the set. It will take, that is intersection. अब आते हैं एक और ऑपरेशन पे, डिफरेंस, सेट डिफरेंस ऑपरेटर, राइट? माइनस भी बोल देते हैं इस ऑपरेशन को। सो सेट डिफरेंस क्या होता है? हियर यू कैन सी द वेन डायग्राम ऑफ ए डिफरेंस बी। ये ए डिफरेंस बी का है, जिसको हम ए माइनस बी भी बोल सकते हैं, राइट? तो ए माइनस बी डिफरेंस क्या करेगा? इफ यू आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सो इट विल टेक द ओनली दोज वैल्यू ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। एक तो कॉमन नहीं है और बी की वैल्यू को तो अवॉइड करेगा। इट विल टेक द वैल्यूज ऑफ ओनली ऑफ सेट ए विच आर नॉट कॉमन विद बी। तो ये है ए माइनस बी, राइट? तो सी, इसको परफॉर्म करने के लिए भी या तो आप माइनस ऑपरेटर यूज करें या फिर डिफरेंस फंक्शन यूज करें। सो हियर वी हैव रिटन दिस ए माइनस बी, सो इट विल टेक ओनली ए माइनस बी है, तो इट विल टेक द वैल्यू ऑफ दिस सेट ए ओनली दोज वैल्यू विच आर नॉट कॉमन विद दिस बी, एंड दिस वैल्यूज आर 1 2 3, so it is giving you that. Alternatively, you can use a dot difference b, so 1 2 3. But here, if you will try b minus a, yeah, b dot difference a, it will be different, because if you are writing b minus a, it will take only those values of b which are not common with a. तो यहाँ पे केवल b की वैल्यू लेगा, that is 6 7 8, 4 5 नहीं लेगा क्योंकि a के अंदर वो अवेलेबल है। So here even you can do the same operation by using this b dot difference, by using function also. Both the options you have, operator के थ्रू भी और functions के थ्रू भी। So that is difference. Now come to the symmetric difference. Symmetric difference, if you look at the Venn diagram, it is just opposite to your intersection. Intersection में common value लेता है, लेकिन symmetric difference में common values को हटा के जो भी है उन दोनों set की value लेंगे। तो अगर हम देखें अगर ये हम इसको देखें तो ये जो level है actually it is little bit less than union but more than others. यहाँ पे जो values मिल रही है union से कम मिल रही है, लेकिन बाकी से आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। सो हियर इफ आई एम हैविंग टू सेट ए एंड बी, इसको परफॉर्म करने के लिए यू कैन यूज दिस कैप सिंबल। नॉर्मल वैल्यूज के साथ दिस सिंबल इज नोन एज बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, बट हियर इट इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर। ऑल्टरनेटिवली ये सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। सो वी आर टेकिंग दिस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सो यहाँ पे कॉमन वैल्यू हटा के बाकी जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं और बोथ द सेट, इट विल टेक दैट एज अ रिजल्ट, राइट? सो हियर इट इज टेकिंग। ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज फंक्शन आल्सो, और यहाँ पे हम चाहे ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी करें या बी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ए करें, वैल्यू विल बी सेम। So here you can perform these
set operations by using these operator, or we have alternatively you can make use of some functions also related to the set theory operations. And now come to another one, Python frozen set. Come to one special type of set. See, list tuple. Tuple क्या है? Basically read only list. Read only means राइट प्रोटेक्टेड लिस्ट आप कह सकते हैं, जिसपे आप चेंज नहीं कर सकते. इसी तरीके से अगर सेट को भी, तो लिस्ट म्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल. सिमिलरली set mutable. So if I want to treat set in immutable manner, for that purpose you can use frozen set. Frozen set basically it is read only set. तो और ये immutable होता है, एक बार आपने डिफाइन किया तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट. सो दैट इज फ्रोजन सेट. तो फ्रोजन सेट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, ये यू कैन सी सिंपल, ये फंक्शन यूज करेंगे फ्रोजन सेट. तो आप कोई भी वैल्यू पैरामीटर पास कर सकते हैं, टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है. जैसे फ्रोजन सेट करेंगे तो एक इम्यूटेबल सेट बनाएगा, एक इम्यूटेबल सेट क्रिएट करेगा. तो यहाँ पे हमने दो इम्यूटेबल, दो जिनको हम फ्रोजन सेट बोलते हैं, दो फ्रोजन सेट बनाए, ए और बी. तो जो भी सेट थ्योरी के ऑपरेशन है वो सब चलेंगे इन पे. लेकिन अगर कोई ऐसा ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे जिसके थ्रू आप इसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने यूज किया ए डॉट एड 3 विद नॉर्मल सेट, इट कैन हैपन, ये 3 ऐड हो जाएगा आपका, मतलब कोई भी वैल्यू करेंगे वो ऐड हो जाएगी, राइट. बट with frozen set, if you will try to perform this operation, it will give you error. Destroying frozen set object has no attribute add. Actually उसके साथ ऐड अवेलेबल ही नहीं है, यही एरर हो गया. उसके साथ इस तरह का कोई फंक्शन अवेलेबल ही नहीं होगा जिसके थ्रू आप वैल्यू को मॉडिफाई कर सके. सो यू विल नॉट फाइंड ऐड और अपडेट फंक्शन विद फ्रोजन सेट. सो दैट इज फ्रोजन सेट. तो अगर राइट प्रोटेक्टेड मैनर में मेरे को यूज करना है अपने सेट को, देन वी कैन डू लाइक दिस. तो उसके लिए हम फ्रोजन सेट बना लेंगे. So this is about set. So now we have discussed about all the types. Now you are familiar that in Python programming, how can you deal with number? Even you have worked with various number based functions. You know what is string. How can you deal with the string? What are the characteristics of a string? How can you iterate through the values of it? Even how can you perform different types of manipulations by using various built-in string functions. After that you have seen list, tuple, which are collections. Even you can use with sequential collection, sequential ordered collection, or you have some other non-sequential unordered collections also, like dictionary, set. So now I hope you are familiar with all these types. तो जितनी भी आगे की चीजें चलेंगी, all others concept will be based on these things. जो मेरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है ना, तो मेरी इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है वो इन्हीं पे डिपेंड है. तो हियर यू हैव सीन कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को के साथ हम वर्क कर सकते हैं, राइट. यू हैव सीन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस फंक्शंस बेस्ड ऑन दीज टाइप्स. तो यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक लेवल आज कंप्लीट होता है. एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट है फंक्शन. फंक्शन को हम कल लेंगे, फंक्शन को आज नहीं ले रहे हैं, फंक्शन को कल स्टार्ट करेंगे. अभी मैं क्या करूंगा, इस रिमेनिंग टाइम में, आज आपका सेकेंड हाफ तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इंडक्शन प्रोग्राम है. सो अभी जो रिमेनिंग टाइम है, इन दिस रिमेनिंग टाइम आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज, जो आज हमने ये की है ना, इस पे बेस्ड होगी. सो यू विल प्रैक्टिस ऑन दैट. और अगर प्रीवियस एक्सरसाइज है वो कंप्लीट नहीं हुई है तो पहले उन पे काम करेंगे. तो सिक्वेंसली आपको स्टेप वाइज चल रहा है, जैसे कि चीजें प्रॉपरली आपके माइंड में प्रोसेस हो, राइट. एक फ्लो बने हमारे कॉन्सेप्ट्स का, इनके इम्प्लीमेंटेशन का भी. सो नाउ यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स. इट्स 11:15 एंड वी विल कंटिन्यू दिस सेशन एट 11:30. उसके बाद वो आपका लैब प्रैक्टिस सेशन होगा. तो आप एक्सरसाइज पे प्रैक्टिस करेंगे और मैं इसी पे बेस भी एक्सरसाइज आपको दूंगा. तो दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द लैब एक्सरसाइज गिवन, देन दे कैन वर्क ऑन दैट. जिनका नहीं हुआ पहले उसको कंप्लीट करेंगे. So now you can have a break and we'll continue the session at 11:30 after your break. Thank you, sir.
Okay, students, so I'm back here. I have already uploaded all the resources and lab exercise for today at Google Classroom, so you can get it from there. Now in the remaining time, you will do the practice on this exercise given. And if you will be having any doubt, any query, please discuss it with me. So now you can continue to do practice on these exercises. Okay, sir. Sir, hello. Yes, tell me. Sir, lab exercise question number 11. समझ नहीं रहा सर वो. Lab exercise 4. हाँ. Question number 11. Question number 11. ओके, इसमें क्या करना है आपको कि किसी भी तरह का पंक्चुएशन अगर आपकी वैल्यूज में है, जैसे आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. So basically here I have given some punctuations. Punctuations marks means these are punctuation marks, right? So if you are having value and if any of these character is coming in that value, it should be avoided. Means suppose I have written some value. Suppose if I have written this value, I am having this value. So यहाँ पे here this value is containing some punctuation like this, this, and this. So output should be like this. Means this punctuation, if you have this, these punctuation should be avoided, and output should be C D A N O I D A. So that should be the output. Are you getting? That you need to do. सर वो इसमें स्ट्रिंग एक मॉड्यूल यूज करके हाँ, कैसा करना है? इसमें एक हिंट दिया गया है कि अब ये जो पंक्चुएशन को अगर आपको डिफाइन करना है कि अब एक दो ऑप्शन है कि एक आइडियली में अगर आप ये कर रहे हो, मींस इफ यू वांट टू स्पेसिफाई दिस पंक्चुएशन समवेयर, एक ऑप्शन तो है कि भाई मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर ही मैंने इनको स्पेसिफाई कर दिया एज ए स्ट्रिंग, मैंने इन वैल्यूज को स्पेसिफाई कर दिया. आर यू गेटिंग? एक तो इस तरीके से आप पंक्चुएशन को डिफाइन कर सकते हैं. एक है ना यहाँ पे मॉड्यूल होता है, स्ट्रिंग मॉड्यूल होता है.
और स्ट्रिंग मॉड्यूल के अंदर भी आपके ये पंक्चुएशन करके होते हैं, और भी फंक्शंस हैं। तो एक पंक्चुएशन फंक्शन है, अगर आप ये करें तो ये आपको इस तरह से रिटर्न करेगा। तो मेन आइडिया कि ये वैल्यूज मेरे को मिल जाए, राइट। तो ये बहुत ऑप्शन, या तो इस तरह से करें। अच्छा, एम्परसेंड क्विट तो इसलिए आ गया है जैसे कॉपी पेस्ट किया है मैंने, आपके उसमें असाइनमेंट में नहीं होगा, ये तो नोटपैड में हमने किया है ना, तो कोटेशन को इसने ऐसे ले लिया, ये हाँ कोट नहीं होगा वहां पे, है ना। वो आप देख सकते हैं हाँ सर। अपने डॉक्यूमेंट पेज पे, ये कोटेड डबल कोटेड है, इसको इसने इस तरह से कर दिया। सो हियर दैट इज दिस। तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। अगर आप डायरेक्टली भी आपने असाइन की हुई है वैल्यूज तो सर फिर मैंने आपको डायरेक्टली जरूरत। असाइन करके किया था ये, हाँ ठीक है, दैट इज ओके। चलेगा ना? हाँ हाँ, ये तो एक ऑल्टरनेट बताया कि आप इस तरीके से भी वैल्यू, मेन आइडिया ये लेनी है वैल्यू। मैं अगर इनको वेरिएबल में ही मैंने स्टोर कर दिया है तो फिर मेरे को इसको जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग? ओके सर। ठीक सर है। वो क्वेश्चन नंबर 15 में वो एग्जैक्ट टेबल नहीं आ रहा था सर, जैसा मतलब आपने आउटपुट दिया है। एग्जैक्ट मीन्स कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर ये 15 मेंटेन टेबल करना है, वाला ये आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये जो वाला, वो जो ये ऊपर के जो, ये जो ऊपर ऊपर का के तो जो आप नंबर है ना, प्रिंट में वो करके ना थोड़े इसको। सामने आ गए। हाँ हाँ, ऊपर वाले को तो आप कर सकते हो मैनेज, उसके लिए लॉजिक नहीं भी यूज करें तो चलेगा। लेकिन हाँ, ये जो वन और इसके बाद ये पाइप सिंबल है, ये हाँ वो एज सब आ गया एज है, इट इज। बस ऊपर हाँ के नहीं ठीक है। है, कोई चलेगा प्रॉब्लम, ना? कोई प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, चलेगा। थैंक यू सर।
5 के क्वेश्चन 4 में करता हूँ. Yes, Akhil, is there any problem? Sir, like print program to set the containing all colors from a list which are represented in another list. So like Which जो यूनिक कलर्स है वो प्रेजेंट करने दोनों लिस्ट के या किसी एक लिस्ट का बता. no, which one? Which exercise you are talking about? Exercise 5 question 4. Question number 4. Okay. So what do you want to know in this exercise? Do we print like the unique colors from both lists or just one list? Just one list. One list. First, preferably. Yeah, first one, color list one. Hello, sir. Yes, tell me. Sir, exercise number 4, question number 12. Hmm. How can I print backward like 2 1 3 2 1? Question lab exercise 4 and question number 12. Okay, let me open it. Question number 12. So here basically, see already I have told you about range function. So if you want to print the values in backward, you need to specify upper to lower value. Means in first parameter value, you will specify larger value, and then up to what value you want to
retrieve the values, you can specify lower value accordingly. And after that, in third parameter, you need to write minus 1, or depends on what step size you want to use. In that way, you can take the help of this to display your value in backward direction in the form of loop. Are you getting the idea? How can you do that? Yes, sir. So you can try that, Okay. because now in this case you need to move upper to lower. Okay, sir.
Sir, a question in exercise 5. Hmm. Exercise 5, question 4. Um, Write a Python program to print a set of containing all the colors from a list which are not present in the other list. Are they Hmm. asking for the symmetric difference, or are they asking for just a normal set difference over here for each pairing? This is about this difference simply. Sorry, Difference of both the list. both the lists. So like A minus B and B minus A, both of them Yes. separately. That's it. Yeah. Okay.
Okay, students. So I hope all of you have got the link for the invitation. Yes, As sir. you already know, in Yes, second sir. half. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, So please join that orientation by using the link provided to you at 2:45, right? सर मुझे नहीं मिला है. आप चेक करिए, वो सबको गया होगा. ग्रुप पे भी है, आई थिंक. व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा गया ना. नहीं आया सर. नहीं सर, ग्रुप पे आप बिग डेटा से या एआई से हैं? बिग डेटा. अच्छा, बिग डेटा ग्रुप को सर नहीं मुझे आया. भी नहीं मिला है। एआई ग्रुप में तो सर, है, मुझे- बिग डेटा ग्रुप में नहीं आया है. मुझे मिला है, मैं बिग डेटा से हूँ, नहीं पर सर। मुझे मिला है। ओके, तो जिनको मिला है वो शेयर कर दीजिए प्लीज. ग्रुप पे शेयर कर दो, आई थिंक, क्योंकि लिंक तो सेम ही है, कॉमन लिंक होगा सबके लिए. सर ग्रुप पे शेयर नहीं हो सकता। शेयर अलाउ नहीं है ग्रुप। अच्छा, अलाउ नहीं है. ओके ओके ओके. तो हाँ, बिग डेटा स्टूडेंट्स को कैसे मिला है? मेल आई है कैसे? सर सर, मेल मेल आया आई था। है, हिंदी अच्छा, में मेल मेल आया. आया। ओके ओके. कौन सा? एमएस टीम का होगा ना? सर नहीं, मैम की तरफ से आया। मैम की तरफ से मेल आया है. ओके, तो जिनको नहीं गया है ना, एक बार आप सिद्धि मैम को मेल कर दो प्लीज. ठीक है, तो टाइमली आपको वो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा जिनको नहीं मिला है. सर मैं अभी चैट में पोस्ट कर दूं, ठीक है, सर. उनको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. हाँ सर, चैट में डाल सकते हैं। चैट में कर दो, चैट में पोस्ट कर दो. हाँ, हो गया. ठीक है, ठीक है. थैंक यू. तो इस लिंक आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसी लिंक के थ्रू आपको कनेक्ट होना है. ठीक है ना? 2:45 पे. ओके. ठीक है, तो अभी के लिए सेशन को क्लोज करें. ओके सर। यस सर. Okay, so here I am closing the session. Thank you. थैंक यू सर।